जय भीम, नमो बुधाय। परवीन भैया, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू।
नहीं भैया, चाय नाश्ता नहीं हुआ, बच्चों का लंच तैयार कर रही हूँ। स्कूल जाएंगे ना। ये यही जगह है मेरे बगल में, मैंने जगह उसे। आराम से बेटा। हो गया पानी। देखो बाल्टी में बहुत गर्म होगा, मिला लेना दूसरे बाल्टी में कम करके। ब्रश कर लो फास्ट, थोड़ा सा रेडी हो। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। बाल्टी में पानी गर्म है ज्यादा, भाई से बोल दो सही से मिला दे दूसरे बाल्टी में। थैंक यू सो मच बड़े भैया, थैंक यू। जय भीम, नमः बुद्धाय। जय भीम भैया, जय भीम, नमो बुद्धाय, थैंक यू सो मच।
जल्दी करो, टाइम नहीं है, बहुत लेट हो रहा है। बाय भैया, बाय बड़े भैया जी, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
नहीं बनाया था वहाँ जाके। हाँ पूछने का नहीं तेरा से उसकी शीट से बनाया मैंने पेंसिल से उसने ड्रॉ करके मुझे पेन काट के दे दिया और मेरी ग्लू स्टिक साफ ऐसे करके तुम्हारी कोशिश सारे खराब कर देगा अरे कुछ ज्यादा लिमिट नहीं होगी कौन सी टीचर साथ मंगा रही है मैं पूछ रहा हूँ अगर एक वो मैं कर दूंगा गाने सिर्फ मांगेंगे ले सकती है क्यों मांग रही है ये वाली सीट साथ लगेगी काम ये वाली होगी वाली का पता है मैं देख यार इनके ऊपर से खोटे
वहाँ से लग गया। आंटी ऑफिस में वापस नहीं कर सकते। बट कल वही वैसे। तो हमारे पेज है वो बैलेट का मैं बोल रहा हूँ हाँ इसकी तो आज एक्टिविटी है किसी मतलब पहली वाली फिश करेगा फिश हो भी गया मटका भी होगा फिश क्लास है बेसिकली भी हो गया और छोटू का बर्थडे मैंने पहले कर दिया था। अरे वो वाला मतलब नहीं पता है इसमें करा हाँ फूकने वाला।
स्वागत है संतोष भैया, कैसे हो आप? गांव कुठला है। हमें तो ये भाषा ही नहीं समझ में आ रही भैया, आपकी लैंग्वेज ही नहीं समझ में आए। सॉरी, आपकी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही। मराठी नहीं आती। नहीं भैया, मराठी कहाँ से आएगी? हम यूपी से, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, मराठी कहाँ से आएगी बताओ? हमें मराठी नहीं आती बड़े भैया जी। और बताइए कैसे हैं आप? फैमिली में सब लोग कैसे हैं? अच्छा, थैंक यू सोनू भैया। जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय, स्वागत है आपका। जय भीम भैया, संतोष भैया, जय भीम। सोनू भैया, आपको तो आती है ना मराठी, हमें ही नहीं आती। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई आपकी? सुबह हो गई सोनू भैया? संतोष भैया चले गए क्या? बच्चा कितना है? बच्चे से क्या लेना है भैया? क्या कर रहा है? स्कूल गया? 3 है। किसकी आईडी है सोनू भैया, बता सकते हो? बोलो क्या खा क्या पीना है? अच्छा, पढ़ाई कराओ उनको। हाँ भैया, पढ़ रहे हैं बच्चे। क्या बोला? कौन क्या बोला भैया? नाश्ता हुआ सोनू भैया आपका? आप क्या बोला? मैंने तो कुछ नहीं बोला आपको भैया। मैंने आपको क्या बोला? कुछ तो नहीं बोला। बताओ क्या बोला, आप ही बताओ। आप क्या सुने हो बताओ। नाश्ता हो गया। अच्छा, शायद हमारी लैंग्वेज आपको ना समझ में आया हो। मैंने सोनू भैया से पूछा।
हुआ आपका नाश्ता? सोनू भैया समझते हैं मराठी, पंजाबी, हम तो बस भोजपुरी समझते हैं और हिंदी भाषा बस, इसके अलावा और नहीं। सोनू भैया हंसने का रीजन बताओ, कुछ तो है जो आप छुपा रहे हो। आपको इंग्लिश नहीं आता, इंग्लिश में बात करो क्या? हमें जब इंग्लिश ही नहीं आती तो इंग्लिश में बात करने से क्या फायदा भैया? हिंदी तो आ रही है आपको अच्छी, ऐसे हिंदी में बात करो। यहाँ एक अलार्म है। आरडी बताओ किसकी है, पहले ये बताओ। मुझे लग रहा है सोनू भैया आपको कोई जान पहचान है। अलार्म गई स्कूल, अलार्म चली गई भैया। नहीं पता, नहीं पता, अच्छा। अलार्म चली गई, कल बहुत रोई, आपने उसका कमेंट नहीं पढ़ा। नाश्ता हुआ आपका कि नहीं? नहीं हुआ तो आओ फास्ट कर लो। चाय देना। चाय पी लो सोनू भैया। संतोष भैया आप भी आइए, चाय पी लीजिए।
जय भीम, जय संविधान। मैंने कहा नाश्ता कर लो, सुने ही नहीं। जय भीम, जय संविधान भैया, सोनू भैया, थैंक यू सो मच। चाय पी रही हूँ, आप भी आ जाओ। जय भीम, जय भीम। मैंने इतनी बार बोला सोनू भैया नाश्ता कर लो, पता नहीं कहाँ एंट्री करके चले जा रहे हो। पहले बताओ बच्चों की तबीयत खराब थी, कैसे हैं अब? रात में मैं तो लाइव चालू करके सो गई थी। मेरा फोन पता नहीं कब स्विच ऑफ हो गया था, कब बंद हुआ मुझे पता ही नहीं चला। स्कूल जा रहे हैं, अच्छा सानवी को छोड़ने। छोड़ आओ सानवी को। सानवी तो मेरे से बात ही नहीं करती है, मैं भी नहीं बोलूंगी कभी। हाँ, सीमा जाटो, जय भीम नमो बुद्धाय दीदी जी, जय भीम नमो बुद्धाय सिस्टर, लाइक डन, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। बताओ कैसी हो आप? जय भीम सोनू भैया, कैसे हो? सोनू भैया कैसे हो बता दो, सीमा सिस्टर पूछ रही हैं। और बताओ दीदी जी कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बहन, आप बताओ आप कैसी हो? जय भीम सीमा जी, सोनू भैया बोल रहे हैं। मैं ठीक हूँ दीदी।
ओके सिस्टर, ठीक ही रहना चाहिए। सोनू भैया भी बता रहे हैं आपसे ठीक हैं। नाश्ता हुआ आपका? चाय नाश्ता हो गया? बस अभी जस्ट हुआ बहन, आप बताओ आपका हुआ? हम्म, थोड़ी कम ही खाए होते यार। कम कैसे खाएं? कम कैसे खाएं? अच्छा, और बताओ सिस्टर। सोनू भैया बोल रहे हैं मिला ही नहीं, कहाँ से होगा? छोटी वाले से बोल दिए होते, बना दिए होते। आप एक बार बोल के तो देखते। अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी ब्रश किए बैठी हूँ। क्यों बहन, कर लो नाश्ता, कुछ कर लो। क्यों ब्रश करके बैठी हो? 9 बज गए। सब लोग का हो गया, मेरा ही देर होगा। अब जा रही हूँ बनाने खाना। कर लो बहन, पहले नाश्ता कर लो, फिर उसके बाद खाना बना लेना। नाश्ता करने के बाद इतना जल्दी कोई खाता थोड़ी है। जय भीम, जय भीम, जय भीम सिस्टर, जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू, थैंक यू सो मच। नाश्ते में ही पेट भर जाता है तो क्या करेंगे? हाँ वही तो कह रही हूँ, नाश्ता करने के बाद फिर इतना जल्दी कहाँ खाना कोई खाते हैं। वैसे भी सोनू भैया यहाँ नाश्ता हैवी होता है, पास्ता का। थैंक यू सीमा सिस्टर, थैंक यू। जय भीम, जय भीम बहन, जय भीम। हमको तो नाश्ता ही नहीं मिलता है। झूठ काहे बोलते हो? हम्म, इतना झूठ काहे बोलते हो भैया? करेला का जूस पीते हो तो नाश्ता क्या करोगे?
ना पता नहीं कैसे पीते भी वो समझ में नहीं आता। पीना है? नहीं नहीं नहीं, माफ करो। माफ करो, मरना पसंद करेंगे। अच्छा। अच्छा, कर लो, प्रयोग कर लो। आ जाइए, सेब और बर्फी खाने। सुबह सुबह में सेब और बर्फी खा रही हो सिस्टर? तब तो सोनू भैया आज करेला का जूस छोड़ ही देंगे, इतना मुझे पता है। थैंक यू बहन पूछने के लिए। खा लीजिए आप, समझो हम भी खा लिए। सोनू भैया के देखो लार टपक रही है, अब तक तो जुकाम से नाक टपक रही थी ना। जय भीम जय भीम जय भीम, आ रहा हूँ फिर। हाँ हाँ बिल्कुल, जाइए। थैंक यू बहन, थैंक यू सो मच। आंवला का जूस। सोनू भैया इस पे लाइव करते हो कि नहीं? अभी नहीं चालू हुआ? बताओ, इस आईडी पे लाइव चालू हुई कि नहीं? कल चालू किया अपने आप बंद हो गया। क्यों? क्यों अपने आप बंद हो गया जब चालू हो गया था तो? ऐसा क्यों सोनू भैया? आज सब मिक्स जूस पीऊंगा। अच्छा, जय भीम जय भीम जय भीम। मैं पूछ रही हूँ आपकी लाइव क्यों चालू हो गई, बंद क्यों हुई?
बाहर जा रहे हो क्या? क्या करने? क्या करने? क्या है? कुछ काम है? नीम, करेला, लौकी, आंवला। अच्छा, चिरे तो डलवा लेना। वो रख दा। थैंक यू सीमा सिस्टर, थैंक यू। हमारा पैसा लाके फिर रख देना जितना बचेगा। जा रही हूँ लौकी का कोफ्ता बनाने। आप बोलो सोनू भैया, जूस पीने से क्या फायदा, कोफ्ता खा लेना। सीमा जी पीना है आपको। सीमा जी लौकी का कोफ्ता बनाने जा रही हैं। फोन लेके जा रहे हो? रिचार्ज खत्म हो गया तो क्या करें? तो कोई बात नहीं है ना, यहाँ से वाईफाई से चालू कर लेंगे हम। जाना दीदी भैया जी खाने के लिए। जाना नहीं सिस्टर, आ जाना, ऐसे बोलो। ओके सिस्टर, ओके, थैंक यू। दीदी आप बोल रही हो थैंक यू, मेरी दीदी की बिटिया कह रही थी मौसी थैंक यू। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी। हमें भी बताओ ना सिस्टर कैसे बनता है कोफ्ता लौकी का, हमको तो नहीं आता। सीमा सिस्टर हमें भी सिखाओ। साथ मिक्स। अच्छा, मिक्स जूस बन गया। आ जाना, आप लोग तो मेरा मजाक उड़ा लेते हो। नहीं सिस्टर, सच में नहीं आता सीमा सिस्टर, मजाक नहीं। जय भीम नमो बुद्धाय सिस्टर, जय भीम नमो बुद्धाय बड़े भैया जी, स्वागत है आपका। कैसे हो बड़े भैया? जय भीम नमो बुद्धाय सोनू पाजी, वीर भैया जी बोल रहे हैं।
ठीक हूँ सिस्टर। ओके भैया, ठीक ही रहना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। सीमा सिस्टर, पाजी भैया जय भीम, कैसे हो? नीम, करेला, लौकी, अदरक, तुलसी। अच्छा, और कुछ? आप तो बोल रहे थे सेवन। जय भीम पाजी, जय भीम। सोनू भैया बोल रहे हैं आज तैयार होना कोलैब के लिए। मैं तैयार हूँ। मेरी साधना सिस्टर से बात हुई है। ओके भैया, ओके, थैंक यू। मैं मॉर्निंग में तो कर सकती हूँ, 1 बजे के बाद नहीं कर पाऊंगी। 1 बजे से पहले पहले आप चाहे जब करा सकते हैं। 2 का नाम भूल गया। अच्छा। 2 का नाम भूल गया। कितने बजे? आप चाहे जब 10 बजे से चाहे जब करा। 10 तो बजने वाले, अभी तो 9:30 हो रहे हैं। 10 से 12 के बीच में चाहे जब करा सकते हैं। 10:30, हाँ कोई बात नहीं है। 10:30, 11 जो भी। सोनू भैया से पूछ लो, पाजी भैया से पूछ लो, ज्यादा जानते हैं। अच्छा, वीर भैया जी से पूछ लूं। वीर भैया जी बताओ, सीमा सिस्टर कह रही ना पाजी भैया से पूछो, लौकी का कोफ्ता कैसे बनता है? बहुत स्वाद बनता है सिस्टर। मैं पूछ रही हूँ कैसे बनता है उसकी रेसिपी। मैंने खाया है। खाया तो मैंने भी। बनेगी कैसी ये बताओ। कद्दूकस करके। अच्छा, और बताओ क्या क्या उसमें डालेंगे, कैसे बनाएंगे, पूरे विस्तार से बताओ। पानी निचोड़ के। अच्छा, उसके बाद? कद्दूकस के पानी निचोड़ के उसके बाद क्या डालेंगे उसमें, कैसे बनाएंगे? उसको पकौड़ी की तरह छान लो। मतलब उसको कद्दूकस के निचोड़ के पकौड़ी की तरह छान ले, समय उसमें कुछ और नहीं पड़ेगा। मैं पूरी वीडियो भेज दूंगा सोनू पाजी को, आप देख। पहले ये बताओ सोनू भैया बनाए कि नहीं बनाए, वीर भैया जी जो भेजे थे। आप देख लेना। ओके भैया, ओके। पकौड़ी कैसे बनता है? वैसे ही गोल रहेगा उसी का, फिर भाजी बनाने। अच्छा, सीमा सिस्टर हंस रही है। सीमा सिस्टर, अलग तरीके से बिल्कुल भी मत करना। जैसे वीर भैया सोनू भैया ने बताए हैं वैसे ही सेम बनाना है। कद्दूकस करके पानी निचोड़ करके पकौड़ी बना देनी है ना, उसमें नमक हल्दी मिर्च कुछ भी नहीं पड़ेगा। बिल्कुल भैया, पक्का मैं फ्री हूँ। आप चाहे जब करा सकते हैं। मैं तो कल ही वेट कर रही थी, तभी मैंने अपनी लाइव पहले ही एंड कर दी थी। मैंने सोचा कि हो सकता है, मैं फिर देखा दीदी की भी लाइव नहीं चली कि बात करूं। मेरा फोन ऑफ हो गया था। आपको लिंक सोनू पाजी को भेज दूंगा। हाँ कोई बात नहीं है। अभी कर लो फिर। अभी दीदी खाना बना रही होंगी ना। मैं तो अभी फ्री हूँ, बच्चे चली गए स्कूल।
मैं 9 बजे तक तो एकदम बिजी रहती हूँ। अभी अभी कर लो, अभी कोई टेंशन नहीं है। पूछू क्या? पूछ लो। अभी फ्री हूँ, अभी से लेकर के 12 बजे तक। फिर उसके बाद किचन में डायरेक्ट जाना होगा। 2:30 बजे बच्चे आ जाते हैं। 2:30 बजे से फिर कंटिन्यू किचन में खड़े रहो। चलो बात करता हूँ। ओके भैया, बात कर लो। वेट वेट कर रहे हैं, अभी जा नहीं रहे हैं। हमारी लाइव अभी चली रही है। सही बोल रहे हैं भैया लोग, कद्दूकस कर ली हूँ। उसके बाद पानी निचोड़ लो, फिर पकौड़े की तरह छान लो। बस टेस्ट करने के लिए सबसे पहले वीर भैया जी और सोनू भैया को देना। चूल्हा फूक फूक के मेरा दिमाग खराब हो गया है। पानी डाल दो, उसके बाद चलेगा शायद दीपक कुमार, जय भीम दीदी, जय भीम बड़े भैया जी, जय भीम, नमो बुद्धाय, थैंक यू सो मच। कैसे हो भैया आप? स्वागत है आपका हमारी लाइव में। ठीक है दीदी। ओके भैया, थैंक यू। ठीक ही रहना चाहिए। और बताइए, नाश्ता हुआ आपका? ओके ओके सिस्टर, जहाँ भटक जाना वहां पूछ लेना सोनू भैया से, अभी गए नहीं हैं। कहाँ से हो बताओ दीदी? मैं यूपी से हूँ भैया। आप कहाँ से हो दीपक भैया? बिहार से। ओके भैया, ओके, थैंक यू। और बताइए, घर परिवार में सब लोग कैसे हैं दीपक भैया? भैया मत बोलो, आपसे छोटा हूँ दीदी। कोई बात नहीं है भैया। भाई बड़ा हो, छोटा बहन के लिए भैया ही होता है। बहन की नजरों में भाई हमेशा ही बड़ा होता है, पिता के समान होता है, क्योंकि पिता की सारी जिम्मेवारियां, सारा फर्ज एक भाई निभाता है।
जय भीम सीमा सिस्टर, जय भीम, नमो बुद्धाय, थैंक यू। बाबा साहब को करते हैं आप लोग क्या चीज भैया बताओ, बाबा साहब को क्या चीज? पूजा बिल्कुल करते हैं भैया। दीपक भैया बिल्कुल करते हैं। आप किसकी पूजा करते हैं? नहीं दीदी, मैं बना लेती हूँ। आजकल खाना को बताने वाला कोई जरूरी नहीं है, सब बन जाता है। वैसे बहुत दिन बाद कोई भी चीज बना तो भूल जाती है और सब कुछ बना लेती हूँ। ऐसा होता है ना सिस्टर, कोई चीज ऐसी होती है हम काफी दिनों के बाद बनाते हैं तो माइंड से वो चीजें ऐसी है ना उतर जाती है। कुछ कुछ गलतियां हो जाती है बीच बीच में। बाबा साहब को दिल से पूजा करते हैं दीदी। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, करना भी चाहिए। जय भीम, जय भीम, जय भीम सीमा सिस्टर, जय भीम। और बताओ दीदी, सब ठीक है? सब ठीक है भैया, हमारे फैमिली में सब ठीक है। आप बताइए, आपके घर परिवार में सब लोग कैसे हैं भैया? आप पहली बार हमारे लाइव में आए हो ना दीपक भैया? ठीक है दीदी, ओके भैया। दीपक भैया आप पहली बार हमारे लाइव में जुड़े हो ना? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका।
कहाँ से हैं दीदी? मैं यूपी से हूँ भैया, यूपी आजमगढ़ से। अच्छा। नहीं भैया, मैं इंस्टाग्राम कुछ नहीं चलाती, बस यूट्यूब चलाती हूँ ना। इंस्टाग्राम फेसबुक कुछ नहीं चलाती भैया। शायद मेरी लाइफ में दीपक भैया आते हैं, कल भी आए थे। अच्छा सीमा सिस्टर। हैं दीपक भैया, सीमा सिस्टर को आप जानते हैं? नहीं दीदी, सीमा सिस्टर बोल रही हैं, हो सकता है सीमा सिस्टर कोई और है। एक नाम से बहुत लोग हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। सीमा दीदी जय भीम। सीमा सिस्टर दीपक भैया आपको जय भीम बोल रहे हैं बहन। जय भीम भैया जी, हमारी सीमा बहन बोल रही हैं दीपक भैया आपको। थैंक यू सोनू भैया। आ गए रूम पे? कभी जूस ही पी रहे हो? अभी घूम रहा हूँ। अच्छा, घूम लो, थोड़ा खाना ना पच जाएगा। इधर कोफ्ता तैयार हो रहा है। सीमा सिस्टर कोफ्ता तैयार कर रही हैं भैया। जय भीम जय भीम जय भीम बहन। आ रहा हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ। और कोई होगा? और कोई होगा मतलब? और सबको लेके आना क्या बहन? बताओ, हमारे घर में मिला जुला के 15 लोग हो जाएंगे।
ओके बाय बाय दीदी, बहुत लेट हो गई, काम भी कर लूं। ओके सिस्टर, बाय बाय। कहीं डर तो नहीं गई सीमा बहन जनसंख्या सुनकर? बोलो। बाय बाय सीमा सिस्टर, बाय बाय। काम कर लो बहन। ऐसे क्यों देख रहे हो सोनू भैया? वीर भैया जी का वेट कर रहे हैं, देखें कब लौटते हैं। कल तो वेट करते करते लाइव एंड हो गई, लौटे नहीं। आज देखो क्या होता है। आज वही होगा। देखते हैं सोनू भैया। भैया बोल के गए ना वेट करो। 12 बजे तक वेट करेंगे ऐसे, फिर उसके बाद हम खुद ही बिजी हो जाएंगे। अच्छा, भी क्या? अभी की भी? पहले बताओ। सीमा दीदी कहाँ से हैं? ये तो हमें भी नहीं पता भैया। दीपक भैया हमको नहीं पता है, बताती हैं हम भूल जाते हैं। आज भी? अच्छा, आज भी मतलब वही होगा। ठीक है, ओके भैया। आपका कल हुआ था सोनू भैया भीम सैनिक दीदी के साथ? वीर भैया जी तो बोल रहे थे शाम को आपको। नहीं। अच्छा, क्यों? क्यों नहीं हुआ? शाम होते ही सब भूल गए पाजी। अच्छा, भैया भूल भी जाते हैं क्या? मैं भी सीख गई हूँ कैसे करते हैं।
और क्या सीखना चाहिए, इंसान से बड़ा थोड़ी कोई चीज है। फिर इनवाइट करो, किसको करूं बताओ? आप फ्री हो क्या? आप फिर बताओ, करते हो। हाँ, झूठ कहीं के। अभी पता नहीं ब्रश किए कि नहीं किए, अभी घूम रहे हो, नहाओगे, ड्यूटी जाओगे, ऐसे बोल रहे हो। हाँ, 30 मिनट खाली फ्री हूँ, काम कर लो 30 मिनट में, जल्दी से रेडी हो जाओ। और क्या, अभी घूम रहे हो, क्या पता चला बच्चे घर पे रो रहे हैं, भाभी बनाई होंगी कि नहीं, क्या कर रही होंगी, उसका टेंशन तो है नहीं। सिर्फ यही बोलोगे कि मुझे नाश्ता नसीब नहीं है। ये नहीं कि सुबह उठ के थोड़ा सा देख लें भाभी फ्री रहे तब जल्दी से नाश्ता वास्ता कंप्लीट हो जाए। अभी जूस पीने के चक्कर में बाहर घूम रहे हो। हम्म, ऊपर से बोलते हो नाश्ता कहाँ मिलने वाला है, खाना कहाँ मिलने वाला है। आज वेट ही करते हैं वीर भैया जी का, देखें कब तक लौटते हैं वापस, कितना टाइम लगता है। हाँ, जहाज वहां से आ रहे होंगे तब तो थोड़ा सा फास्ट, कहीं अपनी मोटरसाइकिल से आ रहे होंगे तब तो लग रहा है कि 2 दिन तो लग ही जाएंगे। हाँ, मैं कल भी ऐसे वेट करी, वेट करो बहन आता हूँ।
लो भीमा बाबा भाले लो बानी कि मसीहा कि बाबा हो भारत देशवर है जब गुलाम क्यों है दीना भाले लहू भीम बाबा भाले लगाने कि मसीहा लहू कि बाबा हो भारत देश रहल जब गुलाम क्यों है दीना भाले लहू। कहाँ झरोखे और हम बैठे हो? क्या हुआ सोनू भैया? अच्छा, अभी जूसवे पी रहे हो? क्या कर रहे हो? घर पहुंचे? बाबा तेरे अरमान को पूरा करके दिखाएंगे। कर क्या रहे हो? धर्मेंद्र कहाँ गए?
रविकांत भैया स्वागत आपका लाइव में। कैसे हो बड़े भैया जी? जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम बहन, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। थैंक यू भैया, थैंक यू। स्वस्थ ही रहना चाहिए। मैं भी ठीक हूँ भैया। और बताइए, नाश्ता हुआ आपका? घड़ी की आवाज आ रही है। हाँ, घड़ी की आवाज आती है। पूरा सिर पे ऐसे ऊपर लगी है ना। और बताइए, घर में सब लोग कैसे हैं भैया? सर का दर्द ठीक है बहन? ठीक है भैया, दवाई तो अभी खा रही हूँ। जब तक खाती हूँ सही रहता है। कभी कभी ज्यादा दिक्कत होती है। अभी तो सही है। पूरा ठीक भी नहीं है, कैसे बता सकती हूँ। अभी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा।
पर अभी तो सही है। टाइम लगेगा रविकांत भैया। एक जय भीम नमो बुद्धाय। अंकल जी स्वागत है आपका हमारी लाइव में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? थैंक यू अंकल, थैंक यू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप अपना हाल बताएं, आप कैसी हैं? जय भी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अंकल जी, आप सबका आशीर्वाद है, बढ़िया हूँ। आप बताइए घर परिवार में सब लोग कैसे हैं? आपका चैनल मिला कि नहीं मिला अंकल? आप हमारे लाइव में भी दर्शन दिया करें। जय भीम नमो बुद्धाय। जरूर दर्शन देंगे अंकल। बताइए आज दिन में आपकी लाइव कब चलेगी? टाइमिंग बताइए, दिन में लाइव आपकी कब चलेगी?
जी नहीं मिला, दूसरा चैनल बनाया है। दिन में 10 बजे से चलाते, शाम को 6 बजे से चलाते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। अच्छा, 10 तो बज गए, अब आपकी लाइव स्टार्ट होने जा रही है। करिए, मैं सपोर्ट कर देती हूँ दूसरे फ़ोन से। आप अपनी लाइव स्टार्ट करिए अंकल। नहीं, मैं 4-6 मिनट लेट हो जाएँगे तो कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ी सपोर्ट कर दूँ, क्योंकि मेरा दूसरा फ़ोन आयुष ले गया, इसलिए मैं इसी फ़ोन से सपोर्ट कर रहा हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। कोई बात नहीं अंकल, आप अपनी लाइव जॉइन करिए, कोई बात नहीं, हम 2-3 घंटे से चला रहे हैं लाइव, हम एंड कर देंगे अपनी लाइव। आप चालू करिए, हमारे पास 2 फ़ोन, हम सपोर्ट कर देंगे। आपकी लाइव इसी फ़ोन में चलेगी ना, जिससे आप कमेंट कर रहे हैं?
10:45 पर आपका क्लेव राइट। ओके भैया, थैंक यू, कोई बात नहीं है। 21 हो रहा है। ओके वीर भैया जी, अभी तो हम फ्री हैं, 12 बजे तक चाहे जब करा सकते हैं। लिंक सेंड कर दीजिएगा। हम तो तब से वेट कर रहे थे, भैया कहाँ चले गए। सॉरी सिस्टर से बात करते करते लेट। अच्छा, इतनी टाइम से बात ही हो रही थी। कोई बात नहीं भैया। हाँ जी, ओके भैया, थैंक यू, कोई बात नहीं है। अरे भैया, नहीं नहीं, सॉरी किस बात की। नहीं भैया, बड़े भैया जी ऐसा नहीं बोलते। हम आपसे सब में से, गोल में से सबसे छोटे हम ही हैं। हम ही से सॉरी बोलोगे। उस तो सिस्टर ने याद करवाया कि क्लेव का नहीं बोलना है। पानी गर्म करने वाला रात कहाँ रखा? रात उसी के फ्रिज के पास में है, दूसरे कमरे में। अच्छा, आप भूल गए थे। तब फिर याद आया कि मैं किस काम के लिए आया था। सोनू भैया सच में बोल रहे थे कि कल वाली हाल आज होगी। वीर भैया जी ऐसे ही बोल के चले गए, अभी उनको याद नहीं होगा। बातों बातों में बोले। ओके सोनू भैया की बात, इसका मतलब सच निकला है ना। कल मैं आपका वेट करती रही ऐसे। ऐसे ही भूल जाओगे भैया फिर कभी हम लोगों को भी। मुझे तो ऐसा लग रहा है। सिस्टर को खुद याद नहीं रहा। अच्छा भैया। रात लड़े थे तो उसकी बात करते करते भूल गया। रात में क्या हुआ था भैया, मैं खुद ही लाइव चली, मैं सोचा एंड करके अभी काम करने लगी, फिर आई यहीं लेटी सो गई। लाइव जब फोन एकदम स्विच ऑफ हो गया, अपने आप लाइव बैठी हुई। मैं जब अलार्म बजा, सुबह उठने की टाइम हुई, तो मैं देख रही हूँ दूसरे फोन में अलार्म लगाई थी, मेरा ये फोन स्विच ऑफ पड़ा है। मैंने कहा है, फिर उठ के फिर इसको चार्ज में लगाई। सिस्टर से तो छोटी बहुत होती रहती है। हाँ, थोड़ी बहुत तो होती रहती है भैया। कुछ नहीं, वैसे ही होना भी चाहिए।
बिल्कुल है बड़े भैया जी, बिल्कुल है। बिल्कुल हक है। लड़ने का, डांटने का, बोलने का सब कुछ हक है। बस फिर वही अब डांट के आए हैं। क्यों डांट के आ गए भैया? आपको भी डांटे सिस्टर? बिल्कुल डांट सकते हो भैया, प्यार से कुछ भी डांट सकते हो, बोल सकते हो। नहीं, गुस्से में अगर बात भी बोल दोगे ना फिर हंसते हंसते में कोई डांट बोल दे चलता है। मतलब बात करके आया। अच्छा भैया जी। कुलेब का बोल के आया हूँ। परसों दीदी की लाइव नहीं चली थी ना? परसों सिस्टर शादी पर गई हुई थी, वही तो मैं भी देखा, दीदी की लाइव नहीं चली। मुझे नहीं पता था ना भैया। उनके यहाँ किसी की शादी थी। अच्छा, मुझे पता था। तो आप तो बताए नहीं, हमारी लाइव में थे कि आज सिस्टर की लाइव नहीं चलेगी। मुझे लगा कि शायद लाइव चले। अच्छा भैया, मतलब आपको भी ये कंफर्म नहीं था कि दीदी लाइव नहीं चलाएंगे? बोल रहे थे कि शायद लाइव चलाऊं। अच्छा भैया, टाइम नहीं मिला होगा ना?
हाँ जी। सोनू पाजी किधर गए? सोनू भैया अभी तो नहा वहा रहे होंगे, अपनी लड़की को स्कूल से छोड़ के आए हैं अभी शायद। क्या करे, अब वो लोग भी परेशान है, बच्चे छोटे छोटे हैं। भाभी भी अकेले परेशान हो जाती हैं। हाँ जी। अब क्या करे भैया, मौसम थोड़ा सा वो होता है ना। अब बच्चे बीमार उमार पड़ जाते हैं और के कहाँ करने लगते हैं। एक लोग तो पूरा बच्चों को देखने के लिए चाहिए, ऊपर से घर में का सारा काम हो जाता है तो कोई भी हुआ परेशान हो ही जाएगा। रोदू लड़की गई है स्कूल। बहुत रोती है भैया। कल ना क्या हुआ, स्कूल से आते ही मैं ऐसे सोनू भैया की लाइव चल रही थी, बैठी थी कमेंट कर रही, आते उनको देखी कि मामा की लाइव चल रही, फोन मेरे हाथ से छीन लिया, मम्मी दो। तब तक बोली पता नहीं क्या लिखी कमेंट में, शायद भाई उसका कमेंट नहीं देखे, इग्नोर कर दिए क्या। लगी रोने, मेरा कमेंट काहे नहीं पढ़े मम्मी, क्यों नहीं पढ़े, मामा बहुत वैसे हैं, बोले नहीं, रोने लग गई। मैंने कहा क्या कमेंट क्या नहीं पढ़े। फिर उसको 1 घंटा लगा शांत कराने में। मैं वहीं था तब। अच्छा आप वहीं थे भैया? मैं तो उसको चुप कराने में लगी थी। फिर मेरी छोटी वाली ले ली फोन, वो पता नहीं क्या कमेंट करे। एक लगाव हो जाता बच्चों से भैया, जिसको अपना समझ वो बात कर ली, उनसे लड़ती रहेंगी, बात करती रहेंगी वो। हाँ जी सिस्टर, ये बात तो है। बच्चों को क्या होता है भैया, बच्चे ही होते हैं, उनको कोई प्यार से बोल दे और उनको चीज से मतलब होती है, खाने पीने वाली, बस वो खुश रहते हैं फिर। सही बात है सिस्टर। जब तक नहीं है तब तक हम भी फ्री हैं, आते ही बहुत परेशान करते हैं भैया घर में। जब तक सो ना जाए तब तक परेशान ही करती हैं।
ये बात राइट है। बच्चों की ना फरमाइश ना बहुत अलग होती है, वो शुरू से तैयारी कर देते हैं। घर में है, मनाना है कि नहीं, क्या रीजन है, कुछ उनसे नहीं मतलब है, उनको चाहिए तो चाहिए। अभी लोहड़ी आ रही है, बेटे ने पहले ही बोल दिया है कि बड़े बड़े पतंग ला कर दो। बच्चों की यही फरमाइश होती है, कुछ न कुछ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं प्रथमवीर भैया? अभी 50 से ज्यादा पतंग पिछले साल के बचे हैं, पर नहीं 2026 जिस पर लिखा हो। अच्छा, बच्चे संभाल के रखते भी हैं भैया, लेकिन उनको चाहिए भी दूसरी। जब दूसरी आ जाएगी ना, वो बेशक उससे खेलेंगे, लेकिन चाहिए। हमारा भी लड़का रखा है। 10-12 पतंग रखा है, और तो बाकी हमने फेंक दिया, इधर उधर फैली थी। और जब आ जाएगा न्यू चाहिए। बच्चों का ना एक एक चीज अपना फेंक दो, उसके लिए भी रोएंगे, नहीं काहे फेंका, हम रखे थे। लाइव एंड करूं वीर भैया जी? बस 10 मिनट थोड़ा चार्ज में लगा दूं। 10:45 पे होगा ना, 40 तो हो गया, 5 मिनट और बचा है। बोलो। लिंक शेयर कर देना, तभी मैं जुड़ पाऊंगी। बताओ वीर भैया जी।